Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is Hamidul Islam talking to you, TGT Science. Today in this video we will talk about the first lesson of class 9th Science. Let's talk about today the very first lesson, that is chapter 1, and name of the lesson is already know, matter in our surrounding. मैटर इन और सराउंडिंग। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। बिफोर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, इस लेसन के बारे में डिटेल जानने से पहले आई वुड लाइक टू से वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स in such a beautiful way. In this universe there are some things that are very big in size, there are some things that are very small in size, and some are intermediate, not so big, not so small. कोई कोई ऐसा चीज़ें बहुत मतलब बड़ा है, कोई कोई ऐसा चीज़ें बहुत छोटा है, कोई कोई चीज़ें बहुत ही छोटा है, कोई कोई दोनों का intermediate, that means in the size of not so big, not so small. And the God has created this universe in a beautiful way. So in the universe, everything and anything, कोई भी चीज़ आप ले लो, कोई भी चीज़ का नाम आप बोल दो, and if that particular thing shows two properties, that it occupies space and has mass, then that particular thing is called what? Matter. कोई भी चीज़ आप उठा लो जिसका क्या है, जो क्या करता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, और क्या है जिसका मास है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। राइट बच्चों, तो पुराने जमाने से ही साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत सारी स्टडी किया, मैटर क्या है, मैटर किससे बना हुआ है, राइट। एंड स्लोली ग्रेजुअली नाउअडेज वी आर गेटिंग this state of matter, what we will study in this lesson. If I want to make your concept clear, then if you think some of the examples from your day to day life, अगर अपना जीवन से हम लोग कोई एग्जाम्पल उठा लेंगे ना और बच्चे सोचेंगे तो बहुत ईजी है, मतलब ईजी से हम लोग समझ पाएंगे। अब कोई भी चीज़ उठा लो, जैसे कि हम लोग ब्रीथ करने के लिए क्या लेते हैं, एयर, we used to take air to breathe, so air is what? It is a matter. We drink water. Water is very essential for our life. Without water can you survive? No. Without air you can survive? No. एयर के बिना, पानी के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं बच्चों। जी सकते क्या? घर के बिना, घर में हम लोग रहने के लिए यूज करते हैं, राइट। clothes we used to wear, the food we eat, whatever it may be, right? If we start from the air we breathe, the water we drink, the food we eat, the house we stay, each and everything, which two condition must be fulfilled. That two condition is what? दो condition को fulfill करना ही पड़ेगा। और condition क्या है बच्चा? देखो कोई भी एक चीज जो क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और जिसका मास होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। As for example, this marker in my hand, so it has definite mass, right? And beside that also, if you keep it somewhere, it will occupy space. So this is what? This is also made up of what? Matter. So what happened? The scientists discuss how the matter has been made up. What is the constituent, of the matter? So the earlier philosopher, पुराना जमाना का जो फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर था, उन लोगों ने मैटर का क्या बोला, that मैटर है 5 कॉन्स्टिट्यूएंट। मैटर के बीच में क्या है, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स? 5 कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड दे कॉल इट एट व्हाट? तटभास। तटभास, व्हाट इज TET? तटभास। दैट मीन्स मैटर्स हैव हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स? 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दैट इज एयर, वाटर, rocks, then
fire, sky. And later on what happened? The Greek philosopher, they have excluded the sky from it. So they said that matter is constituent of how many particles? 4 particles. Or how many things? 4 things. So simply like this way, from the ancient time itself, the scientists are trying to know actually what is matter. मैटर क्या है, मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, इस सारे क्वेश्चन के बारे में साइंटिस्ट ने पहले से ही स्टडी करते आ रहे हैं. आते 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 what we are getting nowadays, that is in the modern age of science and technology. And the modern scientists classified matter in 2 ways. In how many ways? 2 ways. They have classified the matter in 2 ways. One is, और ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, मतलब कितने बेसिस पे मैटर को क्लासिफाइड किया है? 2 बेसिस पे मैटर को क्लासिफाइड किया है. मैटर हैज बीन क्लासिफाइड, मैटर हैज बीन क्लासिफाइड in 2 ways. How many ways? In 2 ways. अच्छा से याद रखना, ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 9th के साइंस में हम लोग ये दोनों तरीके के मैटर को जो दोनों तरीके से मतलब क्लासिफाइड किया गया है, दोनों के बारे में हम लोग क्लास 9th स्टैंडर्ड में ही सीखेंगे. एंड दिस इज योर बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर केमिस्ट्री. बेसिकली दिस चैप्टर्स फॉल इन द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. सो हाउ मेनी ways? 2 ways. कितने ways में क्लासिफाइड किया? 2 ways. First one is on the basis of what? Physical appearance. फिजिकल अपीयरेंस के लेकर के, फिजिकल का अपीयरेंस के बारे ऊपर में क्या करके बेस करके, on the basis of physical appearance. And secondly, it has been classified on the basis of composition. On the basis of what? Composition. ये दोनों चीज याद रखना है बच्चों. सो मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया है. एक क्या है? फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बेस करके, और नंबर 2 क्या है? द बेसिस ऑफ chemical composition. And the matter, when the matter has been classified on the basis of what? Physical appearance, then we called it as physical classification. What classification? Physical classification. When matter has been, जब मैटर को फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे क्या किया जाएगा? क्लासिफाइड किया जाएगा. तो अब हम लोग उसको क्या बुलाएंगे? उसको बुलाएंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन. एंड व्हेन मैटर विल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, वी विल कॉल दैट वन एज केमिकल क्लासिफिकेशन. और क्या है बच्चों? केमिकल classification. When we classify the matter on the basis of its composition. So basically in this lesson we will talk about, right, and we will get the opportunity to learn about the physical classification of matter. So now let's see what are the various physical classification of matter in detail. So now let's see actually by what the matter is made up of. मैटर किस चीज से बना हुआ है जानने के लिए मन कर रहा है कि नहीं बेटा? You are eager to know or not? Matter is basically made up of, or you can say composition of matter. मैटर में क्या पाया जाता है? मैटर किससे बना हुआ है? In simple language, you can say like that. मैटर में क्या क्या है? मैटर मतलब क्या है? मतलब मैटर किस चीज से बना हुआ है? उसमें क्या है?
matter is basically made up of, matter is made up of particles. Matter is made up of particles. Matter किससे बना हुआ है? Particles. Matter is made up of particles. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? इस चीज को अच्छे से दिमाग में घुसा लेना है. Matter is made up of particles. Now let's see what is the size of the particle. Particle का size क्या है? Size of the particles. Size of the particles. Size particle का size क्या है? जिस particle से matter बना हुआ है उसका size क्या है? Right. For that reason, before going to say about the size of the particle, there is one activity given in your NCERT textbook. Okay. Over there, one activity is given by taking the potassium permanganate. Okay, which is somewhat very colorful. So by taking that one, there is one activity. I'll suggest you please go through that activity. Here I want to give you one example in order to know the size. What is the size of the particle of matter? What is the size of the particle of the matter? If you have heard the name of Ujjwala, उजाला का नाम सबको पता है ना? कोई स्टेंसिस बोल दिया मैंने जो किसी को पता नहीं हो. I hope everybody know Ujjwala. So if you then this activity also I am going to say you can carry out by yourself at your home. At your home you can easily carry out this activity. अच्छे से आप लोग कर सकते हो. So for this activity what you have to do, if you take 3 to 4 tumbler, glass tumbler, you have to take 3 or 4. If you take 3 also, then also it's okay, no problem. So you have to take 3 to 4 glass tumbler, and in the tumbler you have to add over there with water. Not full part of the glass tumbler, you have to fill with water. मतलब 3 से 4 आपको ग्लास लेना है जो कांच से बना होगा, राइट. और उसमें आधे से थोड़ा ज्यादा क्या करना है? पानी डालना है. You have to take water, pour water in the glass tumbler, more than half of the glass, and after that, if you add 10 ml of Ujjwala, Ujjwala, no, Ujjwala, I think so. Ujjwala, which is add after washing the white clothes, right? To add some, glamour is in the clothes. That means Ujjwala. Is it right or wrong? The Ujjwala is playing. I hope it is right. And Ujjwala, Ujjwala. Yes, it is Ujjwala. Okay. So you have to add 10 ml of Ujjwala in the first glass tumbler. Then what you will see? आप लोगों को क्या देखने में लगेगा? आप लोगों को क्या देखने में मिलेगा? जब आप क्या करोगे? 10 ml उजाला इसमें डालोगे तो क्या देगा? द कलर ऑफ द वाटर विल चेंज और ना? पानी का जो कलर है वो चेंज होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा बच्चों, डेफिनेटली. यू कैन कैरी दिस वन at your home, because the activity which I am showing over here is very easy one, and all the things will be available at your home. So you will add 10 ml of Ujjwala. How many ml? 10 ml or 5 ml, what amount you want to add, you can add. Then you will see the color of the water in the glass tumbler will change. Next, what you have to do? Next, from here, from this glass tumbler, you have to take 10 ml water. First of all, what you have taken? 10 ml of Ujjwala. And secondly, what you have done? In the glass tumbler where you have add the Ujjwala, जहाँ पे अब लोग Ujjwala मिलाया हुआ हो, वहाँ से 10 ml water ले लेना. लेके this is suppose first one, this is second, this is third, and this is fourth. तो फर्स्ट में से लेके इस बार उजाला नहीं लेना है. इस बार क्या लेना है? फर्स्ट ग्लास टम्बलर से 10 ml पानी लेना है. लेके क्या करना है? सेकेंड वाला में मिक्स कर देना है.
तब भी क्या देखोगे, सेकेंड वाला ग्लास टम्बलर में भी जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा कम होगा, पहले वाला से थोड़ा कम होगा, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा। इट्स वेरी श्योर। देन अगेन you have to take the 10 ml of water from, you have to take 10 ml of water from the second glass tumbler, and you have to add this one, but in the third glass tumbler. Again you have to take 10 ml of water from the third glass tumbler, and you have to add that one in the fourth glass tumbler. What you will be able to see, you will be able to see in each and every glass tumbler there is change of color in the water. Although the portion, the change, the color of the the color of the water will change somewhat less when we continue mixing the water by taking the from the previous one, and if we go adding them, if you go adding them, ऐसा अगर करते करते जाएंगे, इसमें हम लोग पहले लिया था 10 ml, इसमें से पानी लेके यहाँ पे दिया, इसमें से पानी लेके यहाँ पे दिया, इसमें से लेके, तो कलर थोड़ा क्या है, कलर का थोड़ा ब्राइटनेस जो है वो कमते चल जाएगा, लेकिन क्या होगा, द कलर विल चेंज. So if it will continue, if you mix like this a many one, then slowly gradually that color will dismiss. But if you perform this activity by taking 3 to 4 glasses, then you will be able to see everywhere the color of the water will change. Now question is that, अब क्वेश्चन क्या है समझो, अभी बात हम लोग को समझना है, ठीक है ना. क्या जब मतलब हम लोग उजाला पहले मिलाया था तो थोड़ा ज़्यादा कलर चेंज हो गया था, लेकिन उसमें से जब वाटर लेके सेकेंड वाला में मिलाया तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा कम मतलब कंपेयर टू फर्स्ट वन, अगर हम लोग पहले वाला से कंपेयर करेंगे तो सेकेंड वाला में थोड़ा कम चेंज हुआ. जब सेकेंड वाला में से वाटर लेके थर्ड वाला में दिया तो क्या, थर्ड वाला सेकेंड वाला से थोड़ा कम है, लेकिन कलर चेंज होते गया. हम लोग को ये बात देखना है, कलर चेंज होते गया. जैसे कि हम लोग जैसे एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा. Now question is that why that ujala has gone, and why the color of the water has been changed. वाटर का कलर क्यों चेंज हुआ? पहले में 10 ml दिया था, ठीक था, लेकिन उसमें से पानी निकल के दूसरे वाला में तो भी चेंज हो गया. ये क्या हो गया? Yes or no? What happened to it? So the color has been changed because the particles of the ujala, because ujala is also made up of what ujala is also example of what matter, and that is also made up of particles. That is particles of ujala get mixed with particles of water, get mixed with the particles of पानी के पार्टिकल जो है, पानी का पार्टिकल H2O जो है ना, उसका पता है आपको फॉर्मूला वाट के साथ मिक्स होते गया. इसके वजह से क्या कलर चेंज होते हुए जैसे जैसे जाएंगे थोड़ा पतला से बनेगा, लेकिन कलर चेंज होते जाएगा. अगर बहुत सारा मिला देंगे तो कलर नहीं आएगा फिर बाद में. तो फ्रॉम दिस वन, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी 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 टाइनी. यह याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी टाइनी, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल. दे आर व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा है. So what can we conclude? That particles of the matter are very tiny. Very tiny. Tiny का मतलब क्या है, छोटा, बहुत ही छोटा, small. Or you can say they are extremely small. And how much small अब लोगों को पता है कितना स्मॉल है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. जहां तक हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते उससे भी छोटा है. सो बाय सच टाइप ऑफ थिंग्स, बाय सच टाइप ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट मैटर इज मेड अप. मैटर इज मेड अप. ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने क्या सीखा, व्हाट इज मैटर. मैटर इज एनीथिंग और एवरीथिंग. मैटर इज anything or everything which occupies space and has mass. Then we have learned what, that matter is made up of what, particles. What is the size of the particles? The size of the particles are very tiny.
or they are very extremely small in size. How much small they are? Beyond our imagination. जहाँ तक हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना छोटा है. Is it right? Is it clear बच्चों? Next see, what is the next topic in this line? The next topic is properties of the particles of matter. As we come to know, जैसे कि हम लोगों को पता चला अभी बहुत देर हो गए, अभी चला क्या पता चला? Matters are made up of particles. Their size is very small. Now we will study properties of the particles of matter. Properties of the particles of matter. Matter का जो पार्टिकल है वो क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को इस लेसन में दिया हुआ है. So the very first property of the particle is, the very first property of the particle is what? The particles of matter are very tiny. The particles of matter are very, the particles of matter are very tiny, as we discuss. अभी हम लोग इसको सीखे हैं about the size of the particles. So they are very tiny. Second one is the particles. Second वाला क्या है? The particles of matter are continuously moving, or they show kinetic energy. The particles of matters are continuously moving. Let us understand this property of particles of matter. We can understand these properties of particles of matter from the activity that one just we have discussed. अभी हम लोगों ने जो एक्टिविटी डिस्कस किया है उससे भी हम लोग the second property of the particles of matter can understand. When we are adding uzola, 10 ml of uzola in the first glass, then we are adding 10 ml of water from the first glass to the second glass, and from the 10 ml of water from the second glass to the third glass. So what we have got? हम लोग को क्या मिला था? The color of the water was changing. The color of the water was changing. So from this one, what do you know? When you add the uzola in the water, is it remain in the same place? Okay, पानी एक जगह पे मतलब टिका रहता है, वहाँ से हिलता नहीं है क्या? It was uniformly mixed in the water which has been kept in the glass. So how does it will be able to mix? How it the uzola get mixed in the water? पानी के साथ कैसे मिल गया? Because the particles of water are continuously moving. The particles of water are continuously moving. You can also take some other example also. आप कोई एक example ले लो, अगरबत्ती का example ले लो, incense stick. If you light on incense stick at a corner of the room, then if you sit, away from that place, you will not get the smell of the incense stick. You will not get the aroma of the incense stick. If somebody apply body spray in the body, then if you are few meters away from him or her, then also you will get the aroma of the body spray, that is perfume. So how is it possible? How does we used to get? Another very interesting example is there. When something delicious is used to cook in the kitchen, जब किचन में कोई डिलीशियस बनता है तो क्या चलता है, दूसरे रूम में रह के भी हम लोग को पता चलता है आज मतलब कुछ बनने वाला है, कुछ बन रहा है. So how does we come to know all these things? How do we get smell of hot foods? How do we get the smell of the incense stick? How do we get the smell of the perfume? Although
when we are away from the particular position. जब हम लोग उस चीज से दूर रहते तो फिर हम लोग को ये सारे चीज का महसूस कैसे होता है? That is only because of what, the particles of matter are continuously moving. ये क्या कर रहे हैं? Continuously move कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग इस सारे चीज को महसूस कर पाते हैं. नेक्स्ट सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द particles of matter. What is the third property of the particles of matter? That is, particles of matter attract each other. ये पार्टिकल जो है ना, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई ओनली वी आर गेटिंग व्हाट? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. अब लोगों को पता है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड gases. These are the different states of matter. So what are the different states of matter we are getting? A solid, liquid and gas. That is only because of the particles of matter attract each other. And this force of attraction between the particles of matter give rise the different states of matter. And that force or by what force they are attracting each other, that is called force of attraction or intermolecular force of attraction. What we call that? Intermolecular force of attraction, which is greater in solid state of matter, which is what greater in solid state of matter. Solid state of matter में क्या है? Force of attraction between the particles is more than liquid, which is completely somewhat lesser amount than solid. Then क्या आएगा? Gas. So the force of attraction between the particles of matter in solid is greatest. In liquid it is intermediate in between solid and gas, and in gaseous it is least. The force of attraction in gaseous state of matter is least. So these are the basic three properties of particles of matter. So what are they? The particles of matter are very tiny. The particles of matter are continuously moving. The particles of matter attract each other. Now let's see what is given in the next topic. Now let's see the different states of matter, or you can say state of matter. You are very familiar. So अब लोगों को पता ही है, because you are reading this state of matter from class 5 onwards. So what are the different states of matter? Basically there are three states of matter, that is solid, liquid और क्या है बच्चों? Last but not least, gas or gaseous state. Right over here, solid state, liquid state and क्या है? Gaseous state. These are the three states of matter. Besides that, also in your NCERT textbook you will be able to get another state that is given in a rectangular box, that is called plasma. Let me tell you about the plasma. Plasma is that state of matter which have high energetic particle.
excited particles. The state of matter that are made up of excited particles that are called what plasma. Okay, they possess greater energy, greater kinetic energy, or they are very excited. Okay, that state is called plasma. That is different thing. Okay, basically over here in this lesson we will study these three state of matter. So what are they? Solid state, liquid state, और क्या है बच्चों? gaseous state. Now we have to see, अभी हम लोग को देखना है हर एक स्टेट का प्रॉपर्टी क्या है. What are the properties of each state of matter? If you take the example of your textbook, which is a what state of matter? Solid state of matter. If you take the example of your pen, then what is the state of matter of your pen? That is solid state. If you take the example of your pen box, pencil box, geometry box, these are what? All are solid state. So why they are in solid state? They are solid state of matter. Solid state of matter. So if you draw the diagram by taking the object, so if you take your pencil in a white sheet of paper, आप अगर एक white sheet of paper में अपना पेंसिल ले लोगे और उसका डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, राइट, उसका डायग्राम ड्रॉ कर दोगे. If you take a pencil and if you draw a diagram of that your pencil, right, then you have taken a book and you have drawn the diagram over that sheet. You have taken your geometry box and you have drawn the diagram that on the sheet of paper. So what you will observe, each and every object has a definite shape. You see, this is the shape of pencil. Is it similar to this one? No, that is totally different. Then the book. So each and every, what are the different example I have given you? Pen, book, geometry box. मैंने जो एग्जाम्पल आप लोगों को बताया है वो अगर आप लेके व्हाइट शीट पेपर के ऊपर उसको पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? इसे तो पता चलता है, फिर भी अगर आप देखोगे उस पर ड्रॉ करके तो आप लोगों को क्या पता चलेगा? हर एक का एक डिफिनिट क्या है, हर एक का क्या है? डिफिनिट शेप है. और क्या है? एक डिफिनिट boundary. Each and every shape which I have taken over here, they have definite shape, they have definite boundary, they have definite वॉल्यूम, और एक का डिफिनिट वॉल्यूम है. अगर उसके इसे प्रेस करोगे तो क्या छोटा हो जाएगा? नो, they are less compressible, they cannot be compressed. Whatever it may be compressed, that is very negligible. So these are the what? These are the properties of solid state of matter. What are they? Definite shape. Solid state of matter have definite shape, they have definite boundary, they have definite volume, and they have definite, they have definite what? Volume. So these are they have definite shape and size, they have definite boundary, and they have definite or fixed volume. So these are the properties of what? Solid state of matter. ढूंढ के मतलब हर एक जगह से प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछेगा. ओके, विल डिस्कस द क्वेश्चन लेटर ऑन ऑल्सो. आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न होता है इस लेसन से. आई विल डिस्कस इन डिटेल, नो नीड टू टेक टेंशन. बट अप टू हाउ मच आई एम डूइंग, जितना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उतना तक अच्छा से समझिए. अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से थोड़ा वीडियो घुमाइए और देखिए. नेक्स्ट वन इज व्हाट? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. Liquid state of matter, best example is what? The life of living organism. Without water, we cannot survive. So water, that is the liquid state of, best example of what? Best example of liquid state of matter.
Now let's see the properties of the liquid state of matter. Right. This state of matter don't have its own shape. They do not have fixed, don't have fixed shape. It is to take the shape of the container. जिसमें रखोगे उसी का शेप वो ले लेगा. इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है. ठीक है ना? It doesn't have a definite shape, but it have a definite volume. It have a definite or fixed definite volume. How can you understand this property of the liquid state of matter? अब 3-4 container ले लेना. I'll suggest you take 3 to 4 container of different sizes. Suppose this is a container and I have taken another container. Okay, next I have taken another container like this. Okay, and I have measured 100 ml of water. 100 ml of water. So when I pour, अगर आप लोग को भी करके देखना है, आसानी से घर में कर पाओगे बच्चों. कोई भी परेशानी नहीं है इसमें करने में. अलग अलग कैपेसिटी का अलग अलग शेप का 2-3 कंटेनर लेना है. 100 ml या 500 ml वाटर मेजर करके लेना है. लेके हर एक कंटेनर में रखना है. इसमें भी 100 मीटर. सच फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 100 मीटर लाइक दिस, सपोज इट विल कम अप टू दिस पार्ट. Again, if I pour 100 ml of water over here, it will come up to this much. Okay. If I pour over here, and this will come like this. Now you see, when I put the water in this glass, the shape is like this. So it is to take the shape of this glass. When I put in this container, then it take the shape of this one. When I put the water over here, it take the shape of this one. So it doesn't have its own shape. If you pour water in a bottle, it will take the shape of the bottle. If you pour water in a glass, it will take the shape of a glass. If you pour water in a pitcher, then it will take the shape of a pitcher. So it doesn't have a fixed shape. Okay. Now what I am saying, it doesn't have a fixed shape. Shape also stands for when you put the water in different vessel, in different container. Then second one, what we are discussing? We are discussing, हम लोग क्या बातें कर रहे थे? It have a definite volume. Okay. It have a definite volume. Okay. In this one, what can you do? So if you take these 3 type of container and if you mark, you will first of all you have to measure 100 ml of water. पहले आप लोगों को क्या करना है? 100 ml of water लेना है. लेने के बाद उसको 100 ml तक हर एक कंटेनर में कितना आता है? सपोज इसमें इतना आता है, इसमें इतना आता है, सपोज इसमें इतना आता है. तो आप लोग डालोगे सब, तब क्या होगा? हर जगह आप लोगों को 100 ml वाटर ही मिलेगा. उससे ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा. उससे हम लोग को क्या पता चलता है? दे हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, बट लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप. एंड यू नो द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर शो फ्लूइडिटी, और देयर it shows fluidity, or they are called fluid. What they are called? Why they are called fluid? Liquid state of matter is called fluid because they can easily flow. They show the property of mobile. Your mobile means don't talk or don't think that cell phone. Okay, your mobile means they can easily flow, they can easily move. So they are also termed as fluid. Liquid state of matter also we cannot compress it. It is also not compressible. We cannot compress and we cannot decrease the volume. So these are the properties of these are the properties of liquid state of matter. Now let's see the properties of gaseous state of matter. Gaseous state of matter का property क्या है? Right. Gaseous state of matter don't have fixed shape. इसका कोई fixed shape भी नहीं है, and fixed shape and volume. इसका कोई fixed volume भी नहीं है. The liquid state of matter do not have fixed shape as well as fixed volume. इसका कोई fixed shape भी नहीं है,
फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एज वी हैव रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हम लोग क्या पढ़ा था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि हर एक स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अलग अलग फोर्स से, मतलब डिफरेंट फोर्स से क्या करता है, एक दूसरे पे अट्रैक्ट करते हैं, और उसी के वजह से हम लोग क्या मिलते हैं, हम लोग क्या मिलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर मिलता है। तो इन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वीक, वेरी वीक, very weak, very weak. And in liquid state of matter it is weak, and in solid state it is very strong, right? So due to this very weak force of attraction between the particles of matter, gaseous state of matter का पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होने के वजह से इसका क्या नहीं है, इसका कोई फिक्स शेप भी नहीं है, इसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है बच्चों। अरे बट इट शोज ए प्रॉपर्टी दैट इज इट इज हाईली कंप्रेसिबल। इसको मतलब हाई एक्सटेंट से क्या जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। उसका बहुत सारे एग्जांपल हम लोग का डे टू डे लाइफ में है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे कि कार्बन सिलेंडर, राइट? नाउअडेज यू माइट बी हर्ड अबाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, due to this pandemic situation COVID-19, people, there is lack of oxygen, people are dying due to lack of oxygen, they are unable to breathe. So oxygen it can be compressed and it can be put into the cylinder. Carbon cylinder, carbon dioxide gas. You visit the shopping mall, hospital, in your school, everywhere you will be see one red color cylinder, CO2 cylinder, that is carbon cylinder. It is what is carbon dioxide is a gas. Yes, there is less force of attraction between the particles, it can be compressed and it can be liquefied. It can be liquefied only because of that they show the property of what highly compressible. But they are highly compressible. Besides that also, gaseous state of matter are also called what they are also called fluid. Actually, basically what gases and liquids are together called fluid. That means both of them are called fluid. Why this one also called fluid? Because they can also easily move from one place to another place. As I told you, as I gave you some example, we used to get the smell of the delicious food that are cooking in the kitchen by sitting away from it. We can get the smell of the incense stick that has been lighted in a corner of a particular room. So that is only because of what? The gaseous, the particles of the gaseous state of matter can move very fast. Basically when they used to move very fast, कब वो लोग ज़्यादा मतलब फास्टर मूव करेगा, क्या करेगा वो लोग, वो सारे चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट? सो these are the features or these are the properties of gaseous state of matter. So in our later video we'll discuss and I'll try my level best to complete the rest of the portion of this lesson in the single video. So this is the first part of this lesson, and rest of the topic is changes of state of matter, how does one state of matter changes into another state. Okay, that one will, and rest of what are the different other some small topic is there, condensation, evaporation, then diffusion and different scale of temperature. That thing I will discuss in another video. Okay, so up to this much, if you get any confusion, any doubt, any queries, then please comment me so that I can help you. Okay, and please try, if you have not subscribed the channel, then please try to subscribe the channel and please comment. Thank you.